Rushdie's visit seems to have gotten worse, with sources telling your channel that Salman Rushdie may skip the literature festival because organizers are hesitant about the security risks involved. For more, let's go across to Nikunj Garg, who's joining us. Nikunj, we've also heard sources telling you the Rajasthan Chief Minister also met the Home Minister regarding this issue today. Well, yes, Rhythm. In fact, Rajasthan Chief Minister, after that meeting, was very evasive. He was not ready to take any position as to whether his government would allow Mr. Rushdie to finally visit Jaipur Literary Festival or not. He said that a lot of minority institutions back in Jaipur have given him representation, and he do not want a law and order crisis facing Mr. Rushdie's visit to Jaipur Literary Festival. He also said that one will have to follow the law of the land, and since Mr. Rushdie is a person of Indian origin, he holds a PIO card. The government of India certainly cannot stop him from visiting. Now, what is becoming clearer is one thing, one sense one could draw from Mr. Gehlot's comments was that his government certainly would not want any social unrest, any trouble, any law and order problem on their hands, and that is why they would prefer, if through some back channel negotiations with the organizers of the Jaipur Literary Festival and Mr. Rushdie, a way could be found wherein even if Mr. Rushdie visits India, he does not go to Jaipur in particular and attends that literary festival. But nonetheless, he was very evasive. There is no categorical word yet out from the Home Ministry on the entire issue. Mr. Gehlot himself, though, said when asked that has he briefed the Union Home Minister about the entire issue, he said that his government had informed the central government about the developing situation regarding Mr. Rushdie's visit to Jaipur prior to this meeting. So very clearly conflicting signals coming out from Rajasthan state government. Nonetheless, they are also saying they do not want a law and order issue on their hands, but will follow the law of the land rhythm. Nikunj, it seems that's exactly the line that's being taken by the Literature Festival organizers. It's being said that they're also saying they are hesitant about the security risk that would be involved here. Like you are saying, the Rajasthan Chief Minister has met the Home Minister today. Clearly, all signals pointing to security risk being the main line that's being taken by the organizers and the government. Well, yes, till yesterday night, some reports that were emanating from various quarters of the Rajasthan state government also were that there is a substantial security risk, and the Rajasthan Chief Minister is on record today. When he was talking to us, he said that he would not want a law and order situation to engulf, a law and order situation to develop around Jaipur Literary Festival. And now, obviously, Mr. Rushdie's visit is only a sticking point here, which can cause some kind of a law and order trouble for the Jaipur state administration, Jaipur state Rajasthan state government. And very clearly, the report initially also said that because of these very heightened threat perception, Mr. Rushdie would be avoiding coming to Jaipur Literary Festival. Now, having said that, Rajasthan Chief Minister, is maintaining two basic things. He says that, while they do not want a law and order situation, and while he would like to talk to, he said his Chief Secretary is personally looking into the matter, and they would want to talk to the organizers of the Jaipur Literary Festival and Mr. Rushdie himself to find a way out, but also at the same time maintaining that the law of the land, in the sense that the government of India cannot stop any person of Indian origin holding a person of Indian origin card to come from India, would also have to be respected as well. All right, Nikunj, stay with us. Some more breaking news coming in right now. Let's listen into the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, who's spoken on the issue and said that this is a matter of concern, and he's hopeful that Rushdie will keep in mind the sentiments of all groups. हमारे पास में कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं है कि वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कल ही मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो हमारे वहाँ पे स्थानीय लोगों में इसका रिएक्शन है कि वो यहाँ नहीं आने चाहिए, और उनका धार्मिक मामला है और वो लेके प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। तो लगातार जो मुस्लिम संगठन है माइनॉरिटी वाले, वो विभिन्न संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमें बताएं कि ये आएंगे तो यह रिएक्शन हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने पहले भी कल भी आपको कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उनकी कि वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। खाली यही है कि फेस्टिवल जो हो रहा है, उस फेस्टिवल में भाग लेने की खबर छपी थी मीडिया के अंदर,
सर लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, अगर वो आते हैं तो क्या सरकार उनको रोकेगी, क्योंकि भारी विरोध है जयपुर में उनके आने का? और क्या गृह मंत्री जी से आपने कुछ इस बारे में ये ऐसा है, नहीं मैंने जयपुर में कहा था कि हमने जो मुस्लिम संगठनों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है कि राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति है कि राजस्थान के लोगों में आक्रोश है कि वो नहीं आने चाहिए यहाँ पर। ये मैंने कल में पहले ही कर दिया और हमारे खुद के जो अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इनके कॉन्टेक्ट में हैं, वो एक बात रही है। परंतु आएंगे कि नहीं आएंगे अभी इसकी कोई जानकारी हम लोगों को। आप लोगों की तरफ से कोई सलाह दी जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप चिंता है सरकार को? स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, कोई राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी रूप में डिस्टर्ब हो, ये तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ डिफिनिट आपको तो सलाह देना तो पड़ेगा सर, आप अगर चाहते हैं इस तरह की कोई बात। तो आप सलमान रुश्दी से कहेंगे तो कि आप ना आए, क्योंकि PIO है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो आ सकते हैं, उनको आने का। अगर इस तरह क्या राज्य सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, PIO है इसलिए वो आ सकते हैं, उनका अधिकार है। और पिछले 25 साल में मैंने सुना है कि वो कई बार आए भी हैं, गए भी हैं यहाँ पर। जब बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान के अंदर 2007 के अंदर, तब भी वो आए थे, तो ये आए हैं पहले कई बार। पर लोगों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, हमें उनका सम्मान भी करना पड़ता है। आम जनता क्या चाहती है किसी राज्य के अंदर, उनका सम्मान भी करना हमारा फर्ज बनता है। जो फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, वो फेस्टिवल आयोजित करने वाले स्वयं भी इस बात को वो सोच रहे होंगे कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि फेस्टिवल भी बहुत पॉपुलर फेस्टिवल हो चुका है, कंट्री का भी और कंट्री के बाहर भी। तो ऑर्गेनाइजर भी नहीं चाहेंगे कि कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो, वो भी नहीं चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और हम सब मिलकर के कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में